सोसाइटी और सरकार अगर मिलकर काम करें तो तस्वीर किस प्रकार बदल सकती है। सूरत की बारडोली तालुका के नानी भटलाव गांव की यह लाइब्रेरी इसका बेहतरीन उदाहरण है। गांव के युवा सरपंच अंकित चौधरी ने 2021 में कोरोना काल में युवाओं को पढ़ाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अपने संसाधनों से इस लाइब्रेरी को एक जर्जर कम्युनिटी हॉल में शुरू किया था। बाद में गुजरात सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत प्रवासी भारतीय प्रताप भाई पंड्या से मिली 7 लाख रुपए की डोनेशन और 10,50,000 रुपए की सरकारी ग्रांट से इस लाइब्रेरी को 2 मंजिला नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया। आज यह लाइब्रेरी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले आसपास के कई गांवों के युवाओं का बड़ा सहारा है। बाजूना गाम वढवाणियामांथी आવું છું। હું છેલ્લા 1 વર્ષથી ગવર્મેન્ટ જોબની પ્રિપેરેશન કરું છું। લાઇબ્રેરી તો ખૂબ જ ઘણી ઉપયોગી છે। જ્યારથી મેં જોઈન કર્યું ત્યારથી મતલબ 24 કલાક લાઇબ્રેરી ખુલ્લી હોય વિધાઉટ એની કોસ્ટ। કોઈ બી પાસે કોઈ ફી નહીં તે વસૂલવામાં આવતી નથી ને કોઈ બી ચોપડા નીતિ જોઈતા હોય આપણને વાંચવા માટે તો તે મળી રહી છે। લાઇબ્રેરીમાં સુવિધા જોઈએ તો 24 કલાક ફ્રી ઓફ કોસ્ટ બેસવામાં જ છે। છોકરીઓ હોય કે છોકરા હોય બધા માટે અવેલેબલ છે। ગમે એ બુક્સ જોઈએ, બુક્સ જ્યારે જોઈએ ત્યારે જે બુક્સ જોઈએ તે મળી જાય છે। ઇવન જે કોઈ એક્ઝામ છે એ એક્ઝામ રિલેટેડ કોમ્પિટિટિવ ટેસ્ટ લેવામાં આવે છે। એક્ઝામમાં જે રીતે હોલમાં બેસીને આપ્યા છે એ જ અનુભવ અમે અહીં પણ કરીએ છીએ। दरअसल यह आदिवासी बहुल क्षेत्र है और छात्र छात्राओं के पास पढ़ाई के सीमित विकल्प हैं। 24 घंटे खुली रहने वाली इस मॉडर्न लाइब्रेरी में स्टूडेंट्स के लिए सभी विषयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं। साथ ही वाईफाई की सुविधा भी है ताकि वे ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकें। અત્યારે 123 વિદ્યાર્થીઓની કેપેસિટીની અમારી લાઇબ્રેરી છે અને બીજું કે અમારી લાઇબ્રેરીમાં લગભગ 15 થી 20 ગામોના વિદ્યાર્થીઓ આવે છે રેગ્યુલર અને એ લોકો માટે અમે સુવિધામાં વાઈફાઈ પ્લસ બધી બુકો પ્રોવાઈડ કરાવીએ છીએ અને વિદ્યાર્થીઓ અત્યારે એક્ઝામ સેન્ટર સુરત, અમદાવાદ કે ગાંધીનગર સુધીના હોય છે તો એમને ત્યાં સુધી લઈ જવાની સગવડ પણ અમે લાઇબ્રેરીથી આપીએ છીએ। इस लाइब्रेरी में रोजाना 100 से अधिक स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। दूर से आने वाले परीक्षार्थियों को कोई दिक्कत ना हो और वे यहाँ रहकर पढ़ाई कर सकें, इसके लिए एक हॉस्टल भी बनाया जा रहा है। बीते वर्षों में इस लाइब्रेरी में पढ़ाई करने वाले कई स्टूडेंट्स अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सेलेक्ट हो चुके हैं और सरकारी व प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं। सरकार की वतन प्रेम योजना के तहत विकसित यह लाइब्रेरी आज पूरे गुजरात को प्रेरित कर रही है।